Northeast Tonight, brought to you by Oil India Limited, conquering newer horizons, and Pius Group of Institution, Guwahati. Hello and welcome to Northeast Tonight, the show that decodes the region. The Northeast is generally called India's sporting powerhouse because our region has produced so many super sportspersons who have brought laurels to the nation. Today, as the COVID pandemic ravages the world, our country and our region, let's take a look how our sports icons are coping with the crisis and the resultant lockdown and what they have to say to their fans and admirers. Joining me from Siliguri is the torchbearer of Indian football, Baichung Bhutia. From Patiala in Punjab, I am joined by ace sprinter Hima Das. In Guwahati, I have the super boxer Siva Thapa, and at the studios with me is world record holder and 5 times Mount Everest summiter Dr. Ansu Jamsenpa. Ladies and gentlemen, Northeast Live is privileged by the presence of these iconic sportspersons on the show tonight, and yes, all 4 of them, the quad, belongs to our very own Northeast. Everyone, welcome to the show. Let me go straight to you, Baichung Bhutia. Baichung, first tell me, how have you been coping with the lockdown, basically? And you are apparently holed up in your apartment in Siliguri for the past 2 months. I've been coping up well initially, but now I think it's getting a little too much because the lockdown keeps extending. So then I think the frustration is coming out a bit. But apart from that, it's been good. I had my own self-time, did a lot of social work as well as got a chance to work out and get a little fit as well. So yes, good it has been. Absolutely. You know, during the initial days of the lockdown, Baichung, you had posted a very interesting video of your workout where you suddenly land on the sofa in your living room. It was a very interesting video that you had posted. Baichung. Yes, I think initially it was, bit of trying to get too excited of doing a lot of workout. But overall, I think it's been good that, I've managed to learn yoga, I've managed to learn meditation. At the same time, I've been able to also learn a bit of fasting, which is also very important for your health. So I've been doing that. Okay, workouts, yoga, fasting. Here, Baichung Bhutia, ace footballer, former captain of the Indian team, did all of that. Now, let me turn to Dr. Ansu Jamsenpa. We have the 5 times summiter of the Everest, winner of the highest adventure award in the country, Tenzing Norgay National Award, conferred by the President of India. Ansu, welcome. What have you been doing? Tell the viewers, what have you been doing in the last 2 months of the lockdown? Well, as soon as this lockdown was declared, Yeah. I thought that, there's so many things that I wanted to do, but lack of time, I couldn't do it. So Earlier. yes, so I thought this is the right time. And I always wanted to learn guitar, so I'm learning guitar. Learning guitar? Yeah. Oh, had I known before, I would have kept a guitar here for you, So I'm still learning. Well, Okay. Yeah. And also, I do yoga, so I wanted to advance my technique. So I'm learning some advanced technique as well. Advanced technique. Okay, so that means this 60 days of lockdown, had not really been difficult. Have you introspected? Have you thought about life itself? What has it taught you? This 60 days of staying in the house. Actually, I'm a mountaineer, and in mountain also we. Yeah. So it's nothing new for me actually. Like if I say. Because when we are in the mountain, we are totally cut off from the civilization. Yeah. And so I felt very grateful because I hardly get time to spend with my family. So all my family members were at home. So every night before I sleep, I used to pray, and I felt very grateful
yeah, to Absolutely. spend time with my family. Spending time with the family. You see, busy sports people do not get time to spend with the family. They are on tours most of the time, and as far as a sports person, a different kind of a sports person like Dr. Ansu Jansempa, most of the time you spend in the mountains. This is the time that you spend with your family. You are happy about that. Great. Let me go to Patiala, from where I'm joined by Assam's very own Hima Das, one of the sporting medal hopes at the Tokyo Olympics for India. Hima, welcome to Notice Tonight. Hima, what have you been doing? Thank you, Basvita. আপুনি আপোনাৰ অনুষ্ঠানত মাতিলে প্ৰথমে আপোনাৰ চেনেলটো যেহেতু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ সকলোৱে চাই সেইটো কাৰণে আপোনাক কৈছো হিন্দীতে कंफर्टेबल হ'ব सो मैं हिंदी में बात करूंगी पहले तो यहाँ पे हम लोगों को 2 महीने लॉकडाउन पे रुकाया तो उसके लिए हम लोगों का ट्रेनिंग नहीं हुआ था जितना हो सके रूम पे करके हम लोगों का बॉडी में फिट रखा और अभी मूवमेंट शुरू होने लगी है और थोड़े दिन वेट करने के बाद अच्छी तरह से ट्रेनिंग फुल फॉर्म में आ जाएगी और थोड़ा सा कोरोना का केसेस अभी ज़्यादा हो रहे हैं तो इसके लिए गवर्नमेंट हम हेल्थ मिनिस्ट्री रिस्क ले रहे हैं तो थोड़ी दिन बाद शुरू हो जाएगी प्रैक्टिस अच्छी तरह से ओके आपने कहा कि थोड़े दिन बाद प्रैक्टिस शुरू हो जाएंगी लेकिन दिस वीक ये इसी सप्ताह आपने ट्रेनिंग शुरू कर दिया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में आपने आउटडोर ट्रेनिंग शुरू कर दिया है क्या ऑलरेडी हिमा इसको ट्रेनिंग नहीं बोलते इसको मूवमेंट बोलते जो पहले क्योंकि 2 महीने में इतना लॉकडाउन पे रुक के हम जितना कर सके रूम पे कर लिया लेकिन पहले जैसे प्रैक्टिस में फुल फोकस करना है तो पहले मूवमेंट करना पड़ेगा तो अभी मूवमेंट शुरू हो रहा है और ये ग्राउंड हम लोगों को ओपन किया है तो उसमें हमने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके पहले जैसे हम लोग एक साथ भागती थी अभी ऐसे नहीं तो थोड़े दिन टाइम लगेगा क्योंकि सोशल डिस्टेंस तो ये शुरू हो गया और कब मतलब ऐसे ही रहेगा तो इंडिया तो अच्छा होगा फॉर कोरोना और अलग बीमारों के लिए भी अच्छा ये सोशल डिस्टेंस है तो थोड़ा दिन लगेगा तो हम लोग प्रैक्टिस शुरू कर देंगे अच्छी तरह से ओके हिमा आपका एक बहुत ही खराब बैक इंजरी हुआ था आप क्या अभी कंप्लीटली रिकवर हो चुका है क्या जिसको बैक इंजरी होते है उसको ज्यादा मालूम है तो अभी मैं रिकवरी हूँ धीरे धीरे और 1-2 मोमेंट है उसके बाद मैं फुल्ली फिट हो जाएंगे क्योंकि अभी टाइम है मेरे पास बहुत अभी 6 मंथ तक कोई गेम होने वाला है नहीं तो उसी टाइम हमने प्रैक्टिस भी एंड रिकवरी भी अच्छी तरह से हो जाएगी उसके बाद में कंपटीशन जब आएगी तब 2-3 अच्छा कंपटीशन भाग लेंगे तो अच्छा हो जाएगा जल्दी से जल्दी ओके वेल लेट मी नाउ टर्न टू ace boxer 4 times Asian medalist Shiva Thapa Shiva Thapa welcome nice to have you on the show Shiva same question what have you been doing in the past 2 months of the lockdown training kaisa raha what about workouts are you watching films are you listening to music kya kar rahe the aap Yes, definitely. I really, this is a very good question and this is a question everyone is asking that what you are all doing in the lockdown period and I think it's really something that I have never experienced before in my life, whatever's happening, the pandemic around the world and it's it's getting so much crazy day by day and throughout this lockdown period, the time that I've spent in my home with my family, it's really very very memorable for me because I have done things that I've never done in my whole life like मतलब घर के सारे काम spending time with my family mom and dad sitting and chatting with them training at my home my mom watching me during I do my training in the morning and in the evening so my dad is there my brother is there as well he's also an ex-boxer so the time that I've been spending in lockdown has been great and definitely like we all know how important it is to stay home to stay safe absolutely yes safe and also to maintain social distance while going out right
I'm making sure that I'm following all the guidelines and all the rules. Yes. Now, Shiva, आपने कहा कि घर का सारा काम, that means were you helping your mom at housework? खाना वाना बनाया क्या? Yes, definitely. मैंने कुकिंग अभी ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन मैंने घर में कुकिंग सीखा है. मम्मी के साथ किचन में जब वो बनाती है then I'm there watching her cook, and I'm also doing the same thing. She's guiding me, she's teaching me. So I think one thing that I've learned in this lockdown is also. Yes. कोई खास डिश, शिवा, कोई खास डिश बनाया आपने? शिवा थापा? वैसे घर पे obviously being an athlete, I always am very concerned about my diet, but then again जब घर का खाने की बात आती है तो there is no compromises. I mean मम्मी के हाथ का जब घर पे मम्मी आलू भाजी बनाती है, भिंडी भाजी बनाती है तो मैंने वो सब बनाना सीखा है और या Okay. Aloo bhaji, bhendi bhaji, Ansu Janchampa, all the sports stars of India are cooking aloo bhaji and bhendi bhaji during the last years of the lockdown. I'm just joking. So, what do you think? I mean, these are very rare time, isn't it? Rare moments for people like you. This kind of 2 months break at home. Anshu. Yes, it is. This is the first time, for the longest period of time, I'm staying at home. And did you also cook anything special? Yes, I've been cooking every day. Just before I came to the studio, also I cooked lunch for everybody. Okay. And but I have learned new dishes also. And earlier when we used to cook hurriedly, but now I'm cooking with a lot of care and attention. Yes, with full mind. Okay, we'll ask you to talk about one of your secret recipes to our viewers a little later in the show. You think about it. Baichung Bhutia, more than 60 days of lockdown, and a pandemic that is showing no signs of easing out, no signs of getting control. What kind of an impact this could have on Indian sports and sports persons, Baichung? I think it's going to affect quite a lot, especially sports person who are not getting younger. In fact, I was speaking to Leander Paes a few days ago, how he had been looking forward for Olympics, 8th Olympics for him. Athletes like Mary Kom, boxer, this was more or less for them the last Olympics. And when you're aging, I think it becomes very, very difficult. And you postpone that by a year, it's definitely going to make a big, big impact to your fitness as well. And just not, I think, the older, even the younger ones as well, when you don't play for 2 months and you're just sitting indoor, obviously a lot of sports person would be working out, but it's not like working out outdoors and, playing football regularly with your teammates is a very, very different thing. So the impact is there. The younger ones obviously can recover and get fit sooner. But I'm quite sad for especially Olympians who are looking forward for Olympics after 4 or 5 years, and especially the senior ones whose Olympic could have been the last and final time they were participating. Okay, Baichung, we have Hima Das on the show. Would you like to tell her anything? Ace sprinter Hima Das is on this program. Would you like to tell her anything, Baichung? I think Hima Das has been outstanding, especially Northeast is known for football, boxing, other sports. But I think Hima Das आने के बाद Northeast का एक athletics में एक India और just not India एक world में एक Northeast athletics को लेके गया उन्होंने. और मैं उम्मीद करता हूँ उनका भी आगे का दिन में challenges है. I think her first aim is to qualify for Olympics, and hopefully she is young. अभी भी young है और काफी समय है उनको और मेहनत करके मुझे उम्मीद है कि नॉर्थ ईस्ट और इंडिया का नाम एथलेटिक्स में और रोशन करेंगे. तो आई थिंक शी हैज बीन फैंटास्टिक थ्रू आउट द इयर्स सो फार, एंड होपफुली आई एम श्योर दैट शी वुड कंटिन्यू टू ब्रिंग लॉट ऑफ मेडल्स फॉर इंडिया. Absolutely. Hima, you must have heard Baichung Bhutia pinning a lot of hopes on you, बहुत ही आपके ऊपर आपसे उम्मीद है, सारे देश को है. बाइचुंग जी ने भी बताया है, तो आप क्या कहेंगे? डू यू वांट टू से एनीथिंग टू बाइचुंग भूटिया राइट नाउ? हिमा. First of all, thank you, Baishang sir.
पहले जब फुटबॉल खेला था पापा के मुंह से मैंने बोला था, पापा को मैंने बोला था इंडिया का टीम का कैप्टन कौन है, वो बोला है बाइचुंग भूटिया। तो सर को अभी तक मिला नहीं, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मिलेंगे। एंड उन देख के बहुत प्राउड फील होते हैं, नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं। और एक बात यहाँ पे जैसे हम बाहर रहते हैं, मतलब इंडिया के अंदर ही पंजाब हो दिल्ली हो, कोई नॉर्थ ईस्ट का प्लेयर्स जैसे लोगों के सामने जाते हैं तो लोग ऐसे नहीं बोलते असम मणिपुर मिजोरम Yes. अरुणाचल त्रिपुरा मेघालय, ऐसे नहीं बोलते ये कहाँ से, हम लोग नॉर्थ ईस्ट से। तो वो भी एक बहुत सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा जो यूनिटी है, तो आई थिंक इंडिया का दूसरे साउथ में है थोड़ा सा, लेकिन हमारा जो यूनिटी है नॉर्थ ईस्ट का, तो इंडिया में थोड़ा सा दूसरे सिटी के साथ थोड़ा सा कम है, लेकिन हमारा स्टॉक बहुत स्ट्रांग है, इसलिए लोग बोलते हैं ये कहाँ से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं। Okay. Yes, very interesting to have sporting icons, I mean, talk about each other on a show like this. Very, very rare occasion for our channel, Notice Live. It's very interesting to have all the stars on the show at one go. Let me once again go to Shiva Thapa. Shiva, a lot of iconic personalities from different fields have rediscovered themselves, during this break provided by the lockdown. तो आपने कुछ रीडिस्कवरी हुआ है क्या आप में? What do you have to say, Shiva Thapa? Definitely, yes. I think this lockdown may I've experienced various aspects of life. Like I said, I'm a person. I'm a very I believe in a lot of spirituality. I do meditation. I do yoga, and I think there is something, a deep connection that I have felt during this lockdown that I have been missing throughout my life. Staying with my family, every day, watching them do their activities. घर के काम करना, मम्मी पापा के साथ उनके कामों में हाथ बटाना, तो इतना ज़्यादा कनेक्टेड हम काफ़ी सालों बाद हुए हैं इस लॉकडाउन में. Right. Now, Anshu, for a sports star like you, for a sports person like you, yours is a very unique adventure sports. Mountaineering is something that requires lot of grit, lot of determination, lot of toughness. Like other sports, of course, it's slightly different. Now, question is, you need a lot of mental strength. What are you planning during this last 2 months? You have already summited, the Everest 5 times. You have reached the summit, which is no mean achievement. What are you planning next? Did you get time to think about your next moves? Well, last year I have climbed 2 peaks. One is Draupadi Ki Danda, and one is Mount Shibling, sorry, not Shibling, Mount Trishul. Yeah. So this year again I was planning for Mount Nuptse, but unfortunately because of all these problems we couldn't go. So next year I'm planning for expedition. Either it will be in the Uttarakhand or in Ladakh. So never say die spirit. That means the moral of the story is very clear, viewers. That whether it is COVID, whether it is a pandemic, you cannot, check the spirits of a person like Ansu Jamsenpa. Ansu, ये COVID का spirit is not going to keep you down. बिल्कुल नहीं. तो आपका रिजॉल्व जो है, आप बिल्कुल उसी तरह है जो पहले जैसे था, तो कि मैं करूंगा, करके दिखाऊंगा, वही सेम स्पिरिट लेकर आप आगे चल रहे हैं. जी बिल्कुल, बिकॉज ऐसा नहीं कि पहले बार मैंने ऐसा कुछ सिचुएशन देखा है. मैंने माउंटेनियरिंग करियर के दौरान बहुत सारा करियर के दौरान बहुत सारे एक्सट्रीम सिचुएशंस मैंने फेस किया है. मैंने जेट स्ट्रीम देखा, मैंने एवलांचेस देखे जहाँ पे बहुत सारी मौत मैंने देखे, एंड इवन आई माई सेल्फ हैज़ फेस्ड दैट वेरी क्लोजली. तो उस वक्त भी मैं पॉजिटिव थी, एंड आई एम स्टिल पॉजिटिव. आई एम श्योर बहुत जल्दी ये सिचुएशन ठीक हो जाएंगे. तो इससे मेरा अगली सवाल, आप ये बड़ा ही आप इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस आपने बताया कि यू हैव सीन डेथ क्लोजली, एवलेंस आपने फेस किया है, आपने डिफरेंट टाइप्स का आपने मुश्किलात आपने सामना किया. तो अभी जो ये लोग जो बोल रहे हैं कि अभी पेंडेमिक हो रहा है, कुछ नहीं करना चाहिए, अभी घर में रहो, वो तो सोशल डिस्टेंस हमको मेंटेन करना ही पड़ेगा, लेकिन शो मस्ट गो ऑन, लाइफ मस्ट गो ऑन व्हाइल फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस. आप दर्शकों को, आपके फैंस एंड एडमायरर्स को आप क्या कहेंगे एक्चुअली? मैं ये कहना चाहती हूँ कि
ये जो समय है उसको आप बिल्कुल भी वेस्ट नहीं मत कीजिए। एवरी डे कुछ ना कुछ ट्राई टू लर्न सम न्यू स्किल्स, जो मैं खुद भी कर रही हूँ। अपने स्पिरिट को आप कभी भी उसको डिमोरलाइज होने ना दें। एंड ऐसा नहीं कि कुछ भी टू अचीव समथिंग यू डोंट हैव टू वर्क वेरी हार्ड, यू नीड कंसिस्टेंसी। तो एवरी डे यू ट्राई टू लर्न समथिंग एंड देन आप वही बूंद बूंद से सागर बनता है। तो सो लाइकवाइज तो आपकी हर दिन की कोशिश से आप बहुत आगे जा सकते हैं। मतलब आप यही कहना चाहते हैं कि आई मीन प्रिकॉशन लीजिए, सरकार जो आदेश दे रहा है वो करिए, लेकिन मर मर के मत जिया करिए। बिल्कुल 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 सही है। So that is the message from celebrated mountaineer Dr. Anshu Jamsempa. कि you follow all the rules and regulations, but That is don't must. get trapped in unnecessary panic. That is the message. Baichung, what rediscovery, if at all, you have also, I'm sure, introspected on life during the last 2 days, last 2 months. What have you realized really? I think it's been very, very difficult time for everyone around the world and India and in Northeast. I think, in this pandemic, one was saving lives, which I think the government of India has done good job. Now, the second important factor is the livelihood. I think that is where the challenge is going to be. It's been very, very difficult, but it's important that all the states, including northeastern states and the government of India, will have to make sure that the livelihoods are being brought back for especially the weaker section of people. So we saw a lot of, especially the migrant workers, so much of trouble they had to go through. And I think this pandemic, if anybody has had a lot of pain to go through in this entire 60 days of lockdown, has been the weaker section, especially the migrant workers. So I think the government and people around the state district will have to work and make sure that we look after them and bring our livelihoods back as soon as possible. Okay, Baichung, any extra special moment from your glorious footballing career, that you would like to recall that has come back to you during the last, 2 months? Was it the famous Kolkata Salt Lake Stadium derby hat-trick on the 13th of July 1997? Your club, East Bengal versus Mohun Bagan, where your goals made your club win, and there were nearly 140,000 spectators. Was this the event that was coming back to you? No, I think during the lockdown last 60 days, I've been having a lot of interviews, a lot of webinars, a lot of Skype talk, and whenever we've spoken football, I think this hat-trick match is always spoken about and talked about. And obviously, it is one of the most memorable match for me and one of the best matches for me and the club in front of 140,000 crowd. So that's always been one of the memories which I cherish. So I've been speaking a lot about this, but yes, I think because when you have that kind of occasion and that kind of match, I think it always remains in my memory as well as football fans across India. Absolutely. Let me also quickly I'll go for a break very soon, but let me go to Hima Das. Hima, एक एथलीट के लिए हर वक्त फोकस रहना चाहिए. दैट इज द गोल. आपका जो गोल है उस गोल की तरह आपको मतलब फॉर योर गोल यू हैव टू अचीव योर गोल, यू हैव टू स्टे फोकस्ड ऑल द टाइम. नाउ ये जो कोविड पैंडेमिक है, do you think that has impacted you, and have you deviated from your goal of winning an Olympic medal this time, whenever it is held, of course? पहले तो 2021 में ओलंपिक के लिए डेट फिक्स किया है, और जो लोगों का एक फोकस रहता है ओलंपिक खेलने का. अभी जैसे पूरा दुनिया बोल रहे ओलंपिक खेलना पड़ेगा, तो उन लोगों का जोर से मैं कोशिश करूंगी. वो पहले तो हमको क्वालिफाई करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ओलंपिक क्वालिफाई करना. लेकिन मेरा ड्रीम एक ही है, जो मेरा टाइमिंग है उसको मैं थोड़ा सा बेहतर करूं, थोड़ा सा 1 माइक्रोसेकंड कम करूं, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा. और देश का जो न्याय भी है उन लोगों के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि ये टाइमिंग तोड़ने के लिए उन लोग बहुत मेहनत करना पड़ेगा. क्योंकि एक टाइमिंग तो रिकॉर्ड तोड़ेगा तो दूसरा रिकॉर्ड आएगा, तो तभी इंडिया डेवलप होगा रनिंग में. 400 मीटर 200 मीटर. ओके, ये
हिमा, कोविड का जो पैंडेमिक अभी चल रहा है, सारा विश्व में ये फैल गया है, हैज इट अफेक्टेड योर मोरल एज ए स्पोर्ट्स पर्सन? हाँ, प्रैक्टिस में थोड़ा सा पड़ रहा है क्योंकि कोई नहीं, पूरा वर्ल्ड लड़ रहा है इसके लिए, कोरोना वायरस, कोविड-19 जो भी बोलते हैं उसको। एंड अभी इंडिया उसको उसको क्या बोलते हैं इसको, लड़ रहा है। और पूरा दुनिया थोड़ा थोड़ा तो गई है, अभी इंडिया में थोड़ा सा केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो पहले तो मैंने असम गवर्नमेंट एंड डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा सर को बहुत बहुत थैंक यू देना चाहती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने पहले से ही सब कुछ तैयारी करके रखा है। और अभी केसेस बढ़ रहे हैं तो भी इतना कम नहीं हो रहा है असम में। और एक लोगों का रिक्वेस्ट है, अभी थोड़ी देर बाद बाढ़ भी आने वाला है, आई थिंक आ गया। और ये भी केसेस है, तो लोगों को भी बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं चाहती हूँ लोग भी लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी करो। भूपेन मामा ने बोला थे, মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নাভাবে ভাবিব কোনেনো কোৱা। तो अभी अपने आप को नहीं, आपके दूसरों को भी सोचने का समय है। Okay, let me turn to Shiva Thapa. Shiva, Indian Sports Ministry has come out with an SOP, standard operating procedure for the country's sports persons. अभी क्या करना चाहिए, during the lockdown. अभी तो lockdown चल रहा है, a lot of relaxations are there. But what are the relaxations for the sports persons? What are you going to do? Are you going to start proper training now, Shiva? हम घर पे जिस तरीके से हमें हो सकता है हम कंटिन्यू करने की कोशिश करते थे उसे पूरा। उनकी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं तो हम उस क्लासेस को अटेंड करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर, डाइट के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर क्लासेस होती हैं। तो बहुत कुछ लॉकडाउन में हमारे ऐसे एक्टिविटीज़ होती आई है। और मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट जो एसओपी का प्लानिंग का है, और आई थिंक सारे एथलीट चाहते हैं कि दे गेट बैक टू द ट्रैक एंड गेट बैक टू द रिंग। बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एट द एंड ऑफ द डे हिंदी में कहावत है, जान है तो जहाँ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने आप को, अगर आप फिट है, आप हेल्दी है, आप स्वस्थ है, तो आप ज़िंदगी में आगे क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में आप सोच सकते हैं। तो इसीलिए हेल्थ कम्स फर्स्ट। तो इसीलिए ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन वी आर ऑल मेकिंग श्योर दैट सेफ्टी किस तरीके से रखा जा सके। Absolutely. On that note, we'll go for a break, but don't go away. We are engaged in some very interesting conversation with the sports icons, all of them from the Northeast. I'll be right back. Welcome back. Let me go to Baichung Bhutia. Baichung, despite the odds, we have seen Bundesliga and the K-League, they are up and about. Do you think any sporting federation in the country will be able to come back with competitive sports or sports in general in the coming days as far as India is concerned? Because Bundesliga has set an example, K-League has set an example. Of course, Bundesliga is spending money paying for the test of 25,000 of their players and supporting staff. Can any sporting federation in India do this, or what should be done? I think if any sports can, I think it's only cricket, because they have the money. They have so much money, they don't know what to do as well. So, they can afford to test and start resuming. Yeah. But I'm not too sure whether the game is going to really kick off, especially cricket, because without spectators, I think, cricket is going to be a very, very different game, because spectators makes it very, very exciting when you're on the ground, on the stadiums. The environment is so much fun. It makes it fun. But whereas I think football and other sports, individual tennis, badminton, there's always action-packed. It's a short duration.
and people don't lose interest. They'll always focus on it. Right. But I think cricket, if they start without the spectators, empty stadium, that's one game that's going to suffer quite a bit, because people in India go to watch cricket because they want to see stars, they want to feel that environment, and they get to see a lot of Bollywood actors there. That's where they go in. So Yeah. once that spectators don't get in, I don't see how cricket fans are going to watch it. Now, what about politics? You floated Hamro Sikkim party. Has politics now taken a back seat, Baichung Bhutia? I think politics this time, obviously in this time, we need to all support the government, and which we've been supporting government of Sikkim in every possible way. Yeah. I personally have been doing a lot of social work in whatever capacity it can be. A lot of Sikkim students, people who's gone out for treatment, people who's gone out for holidays, who are stuck outside, who are working outside Sikkim. Through my own friends and network, I've been able to support in a small way. So I think we've been always trying to support, and also whenever we've spoken positively in terms of there's been positive, I won't say criticism, but suggestions which we put to the government of Sikkim. Yeah. And again, I think the government of Sikkim has done a great work by combating COVID-19. We just had one case so far, but problem here is it's not about only lives now. After 60 days, which you had time. Now, I think it'll be a challenge for government of Sikkim as well as northeastern governments and government of India. How are they going to look into the livelihoods of people, and especially the weaker section, because that is where they'll have to make sure that people are going back to work. The economy is Right. getting back to normal, and that is where I think the challenge is going to be in future. Right. Now, Anshu, नॉर्थ ईस्ट में देखिए आप 45 मिलियन पॉपुलेशन है, 8 स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्ट स्पोर्टिंग पावर हाउस कहा जाता है। लेकिन अभी नॉर्थ ईस्ट में देखिए आप सारा 45 मिलियन पॉपुलेशन में जो कोविड पॉजिटिव केसेस है ये 15 से भी नीचे है, 1500 से कम है। सो डेफिनेटली आपको क्या मानना है कि आप ये मानेंगे कि ये नॉर्मल लाइफ जितना दूर हो सके मतलब विद इन द प्रिकॉशंस नॉर्मल लाइफ चलते रहना चाहिए, स्पोर्ट्समैन जो है स्पोर्टिंग का प्रैक्टिस ट्रेनिंग ये सब चलते रहना चाहिए विद सोशल डिस्टेंसिंग, ये आप मानते हैं क्या? जी हाँ, अभी जो सिचुएशन में देख रही हूँ उस हिसाब से जैसे कि आपने बोला कि पॉजिटिव केसेस बहुत कम है, तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है ये जो भी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट का जो उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए, और जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ है उसको मतलब फिर से रिस्टार्ट करना चाहिए। मतलब if you want you can do, like for example you were saying that you at home also, like Baichung was also saying and Hima was also saying that at home also they were practicing, they were trying to keep themselves fit with yoga and other exercises and all that. It's training their mind, mental training and everything. So sports persons have to, they cannot waste a moment, isn't it? Because the moment situation normalizes they have to perform. Yeah, very true. तो आपने कैसे मतलब आपको फिट रखा? You said you did yoga, but otherwise what have you been doing? Yoga, then some do mixed training. तो घर पे ही कुछ जिम इक्विपमेंट्स वगैरह तो उसमें वो कर रही हूँ, पुशअप वगैरह कर रही हूँ, स्टैटिक रनिंग वगैरह, ये सब इस तरह से मतलब ये रख रही हूँ अपनी फिटनेस को जो है। Okay, static running, yoga, push-ups, all these things. Hima, what did you miss? आप क्या सबसे ज़्यादा आप इस लॉकडाउन पीरियड में आप क्या मिस किए थे? Was it the track that you missed the most during your lockdown period? डेफिनेटली ट्रैक मिसिंग, एंड मेरा कोच को ज़्यादा मिस किया, गेलेना मैम को, और अभी मिला हूँ कोच को, क्योंकि हम रूम पे थी और रूम से बाहर नहीं गई थी। तो हमारा कोच का जैसे जो हॉस्टल है उन लोगों का भी अलग है, हम लोगों का भी अलग है। तो 2 महीने ट्रैक को मिस किया, कोच को मिस किया, फ्रेंड्स को मिस किया। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट में जो आपका कोलीग्स है, जो स्पोर्ट्स पर्सन्स है, काफ़ी सारा स्पोर्ट्स पर्सन्स नॉर्थ ईस्ट में है डिफरेंट स्पोर्ट्स में, उनको आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहते हैं आप उनको? हिमा, देखिए अभी सभी तो यही कर रहे हैं, कोरोना पहले उसको खत्म करना है, और उसके लिए ओलंपिक तक पीछे करना पड़ रहा है क्योंकि इतना बड़ा बीमारी है। जी यस। तो अभी असम में भी असम ओलंपिक एसोसिएशन, एथलीट एसोसिएशन ऑफ असम,
तो इन लोगों ने भी बहुत सारा कुछ कुछ कर रहे हैं, जैसे लेखकों जी ने भी लोग जो असम का प्लेयर्स है उन लोगों से बातचीत करके उन लोगों को मोटिवेट करके रखा है। जैसे चीफ मिनिस्टर सर भी उनके साथ बात करके मोटिवेट करके रखा है। तो पहले तो हमको ये इसमें बसना है, क्योंकि ये बहुत फैलते हैं अभी। एक के बाद एक जैसे केस आ रहा है जो फैलते हैं, तो इसके लिए अपने आप को उससे बचाना होगा। और जो जो प्लेयर्स है उन लोगों का ज्यादा के ज्यादा गांव में तो अच्छा है, क्योंकि गांव में थोड़ा सा जमीन है, तो घर में जमीन है तो 30 मीटर तक जो जमीन निकल जाएगी उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट कर सकते हैं। एंड जो लोग सिटी में रहते हैं उन लोग का भी रूम पे योगा हो या प्रोनाउंसिएशन हो या मेडिटेशन हो, इसमें भी बहुत काम करते हैं बॉडी में। तो नया युवा के लिए वो करना जरूरी है इस टाइम। ओके मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, आऊंगी आपके पास, आई विल कम बैक टू यू, बट शिव थापा, व्हाट इज योर इमीडिएट गोल now that now you know as far as boxing is concerned? Do you think Tokyo Olympics is a possibility? Do you think there is a chance? I would definitely say that, you know, I mean, that's what I have been dreaming since I have been into the sport of boxing. And every year, every day, every second, every minute of my life, you know, this is something that keeps running in my head. You know, being a part of Olympics, being a part of World Championship, bringing medals in bigger events. So for me, postponing Tokyo Olympics from 2020 to 2021 has, I'm sure, you know, a lot of athletes has faced, you know, I mean, probably many psychological problems as well, because that has been a dream, that has been a target that an athlete's, you know, thinks about from the past 4 years. So now, since the Olympic has been postponed for the next year, so it is not easy. You know, everyone is getting restless because it was so close. It was so close. You know, to their dreams. They were so close to their dreams, and now the chances of happening Olympics has been postponed to next year. So for me, I would say I just try to stay positive in these times. I just try to make sure that, you know, I keep my patience and I keep doing my thing, keep practicing boxing, keep improving myself day after day. Right. Now, Shiva Thapa, you know, the COVID crisis, it is unlikely to end anytime soon. I was asking this question to Baichung Bhutia as well. Do you think it will badly impact competitive sports? I definitely feel that since you know our माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमें गाइडलाइन दी है सोशल डिस्टेंसिंग का, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले है इस कोविड से हमें जीतने की, तो और कोविड को दूर भगाने की, तो मुझे लगता है कि बॉक्सिंग और जितने भी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है, इन सब गेमों में हमारा कॉन्टैक्ट ही, ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा हमें कॉन्टैक्ट होता है। तो इस वायरस के दौरान हमें जितना हो सकता है, आई थिंक ट्रेनिंग अगर हम करें भी तो हम कॉन्टैक्ट वाली ट्रेनिंग जो है हम वो स्किप करने की कोशिश करें, और जितना हो सके इंडिविजुअल ट्रेनिंग करें, डिस्टेंस मेंटेन करके ट्रेनिंग करें। Right. Let me turn to Baichung Bhutia once again. Baichung, you know, the world is witnessing a new normal in all spheres. Now, you are a politician as well, apart from being, if I may use the word, you are not a conventional politician, but nobody can deny the fact that since you launched Hamro Sikkim, you are also going to be described as a politician. But the question is, do you expect our politicians also to behave in a new normal manner? And if so, what should be the new normal for Indian politicians, Baichung? I feel it's important for politicians to get the right knowledge about COVID-19, because people listen to them, people hear what they have to speak, and with the right knowledge, right information they need, when they speak up about COVID-19, is they can spread the awareness. So I think it's very, very important that they are briefed from different political parties, different governments, briefed that what they need to do. You know, we've been seeing mask, everybody has to wear mask. That is very, very important. I feel that. But you can't be wearing mask when you're walking, driving, or you're alone, or you're with your own family. You know, we've seen cases I think in China where children were jogging with masks, they fainted because you need fresh air to get in. So, you know, I think when you're speaking to somebody close by, you need to wear a mask. When you're in crowded places, you need to wear a mask. But when you're walking or traveling or jogging, training,
and nobody's around you, I think you can relax your mask, get the fresh air to breathe, come in. So I think the most important factor now is to make sure that people start living healthy and start living fit. That is how you can combat COVID-19. And there are small things Yeah. like getting the right immune. Our mothers used to give us haldi, our mothers used to give us ginger Yes. tea, lemon water. So these are small things I think which can really build your immune. Once your immune is strong and you're fit, you're healthy, I think you can overcome COVID, which you've seen across the world and India as well. So I think the politicians will now have to show the right example and not, guide people in a lot of wrong ways. You have taught about eating healthy and so on. What kind of a diet are you in these days? Because I've heard that you are taking a lot of ginger and lemon tea, Baichung. Yes, I think very basic thing because these are because what we've been hearing about COVID is, and people, if you look at the data as well, the people who had major problems or who actually died because of COVID are people obviously aged who are very old, who's got lesser immune, already have severe other ailments which for sugar or some other things. So I think this is where if you build your immune from the childhood and you're staying healthy, I think that's where I think we'll have to focus. So I've been getting back to that. I've also cut down on a lot of my unhealthy diets, which for the last 60 days. One of the reason obviously was I'm staying alone, so sometimes you get bored to cook, so you're trying to eat healthy, which is easier one. Absolutely, absolutely, absolutely. Let me go to Hima once again. Hima, you were so young, but what has this pandemic break told you, if I may use the word, the lockdown, I mean, actually? What has it taught you? Have you rediscovered yourself in any way? Hima? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है क्योंकि ये लॉकडाउन के टाइम 2 महीने रूम पे घुस के मुझे एक ही बार एहसास हुई थी डेडिकेशन पहले आते डेडिकेशन सिखाया है पहले भी थी लेकिन अभी बहुत ज़्यादा डेडिकेशन सीखने को मिला है क्योंकि और पहले तो बाहर में जाके जो खाना खाते वो सब नहीं खाने के भी हम लोग जिंदा रह सकते और ये सबको सिखाया है जैसे हम लोग बाहर गए ये फास्ट फूड खाया है वो बिना खा के भी हम लोग अच्छी तरह से जी सकते और लोगों को ना मिलने के भी हम लोग अच्छी तरह से रह सकते हैं घर पे तो ये सब मुझे सिखाया पहले तो डेडिकेशन अच्छी तरह से सिखाया है ओके नाउ आपका जो फैंस है एडमायरर्स है असम में नॉर्थ ईस्ट में सारे इंडिया में आप उनको क्या कहना चाहते हैं हिमा हाँ जैसे मैंने आपने देखा होगा लॉकडाउन के टाइम जब रूम पे थोड़ा सा कभी कभी बोरिंग भी होते ऐसे नहीं एंजॉय करते हर टाइम जब बहुत बोरिंग होते तो फ्रेंड से बात भी कर लेते हैं जैसे मैंने इंस्टाग्राम लाइव आई थी जैसे रायना सर के साथ बहुत लोगों के साथ हमने बातचीत की थी तो उस टाइम फ्रेंड्स को भी एक एंटरटेनमेंट हो गया हमको भी एंटरटेनमेंट हो गया तो ऐसे की थी और मैंने इसी टाइम में उनको वही बोलना चाहती हूँ पहले अपने आप को फिट रखिए अपने आप को बचाइए और अपने आप को बचाएगी तो पूरा देश बचेगी So, I will come back for your final comments, but Baichung Bhutia, I have Everesta Ansu Jumsen Pound, as you know, on the show in the studios. Would you like to tell her anything, Baichung? No, I think she people like her are the real heroes because you tell me to climb Everest, I would never be able to do that, and I would not even try that. And for people to do that should have really strong stamina and mental power to really achieve that because Everest is not only about stamina and your health; it's also about your mental toughness. Can we have Anshu on the, I think on they the are screen, the biggest please? example, Yes. and congratulations to her. She's, I think, been climbing different big peaks around. But I think they are the ones who will have to help people around to tell them the kind of mental strength. Because after COVID-19 and during this period, more than anything else, I think people require that mental toughness.
And this is where I think people like her are the biggest example. Yeah, Anshu, you have heard Baichung Bhutia say that उनको आप एवरेस्ट क्लाइम करने का बोलिए वो कभी नहीं कर सकता है. Certain things everybody can't do. So what do you have to tell him? Same goes with me also. Like अगर मुझे कोई फुटबॉल खेलने के लिए बोलेंगे तो I can't sorry I can't do that. And thank you so much for your kind words. And उनके बारे में तो like we were nowhere in the picture. तभी से मतलब he is a star. उनके बारे में हम सुनते रहते थे. So I'm very happy that I got an opportunity to interview with him. Absolutely, absolutely fantastic. Finally, Baichung, are you missing your kids? How can we defeat COVID in your view? Baichung. I am missing my kids, so luckily I bought my tickets for 1st June Okay. to fly to Calcutta. They are in Calcutta, so hope. Okay. Okay, I think we have lost that line with Baichung Bhutia. Let me go to Siva Thapa. Shiva, what have you missed during the lockdown? Your friends, travels, or the boxing ring? What did you miss? Siva Thapa. डेफिनेटली जो दुनिया भर में और जितना ये महामारी चल रहा है तो इसको देखते हुए सबसे ज़्यादा तो मेरे माइंड में ये रहता है कि किस तरीके से लोग अपने आप को सेफ रख सके, किस तरह हम अपने आप को सेफ रख सके. फिलहाल डेफिनेटली लाइफ में सबकी एक ड्रीम होती है, गोल होती है, एक एम्बिशन होती है. बट जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, जान है तो जहाँ है. तो right now at this situation I definitely miss boxing, I definitely miss competing, I definitely miss training in the ring, training with my partners. But at the end of the day, I just wish that we get over this COVID and we shall get back to normal days. Are you confident, Siva Thapa, are you confident India will emerge stronger as a nation after the pandemic is brought under control? डेफिनेटली यस. लाइक आई सेड, क्योंकि जो एक साथ काम करना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. यूनिटी में काम करना, यूनिटी में स्ट्रेंथ है और यूनिटी ही पावर है. तो मुझे लगता है कि इसी तरीके से कोरोना वायरस ने हम सबको एकजुट करके लाया है, एकजुट करके बनाया. वन पावर, वन स्ट्रेंथ, वन नेशन. और मेरे ख्याल से ये यूनिटी जो है हमारा और स्ट्रांग हुआ है इस पेंडेमिक के दौरान. तो मुझे लगता है कि जैसे ये पेंडेमिक सून ओवर होगा, कृपा से, यूनिवर्स की कृपा से, भगवान की कृपा से, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस पेंडेमिक के बाद हमारा जो देश है वो काफ़ी एक अलग नज़रिए से देखा जाएगा पूरी दुनिया भर में. जिस तरीके से हमारी यूनिटी है, जिस तरीके से हमारी बॉन्डिंग है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जय भारत, जय हिंद. हम कोरोना वायरस को जल्दी हराएंगे और देश को आगे ले जाएंगे. Absolutely. Finally, last word to Hima Das. Hima Das, do you think there will be sunshine after the rain? बारिश का बाद सनशाइन जरूर आते हैं. गुड डेज विल कम. वी विल विन द बैटल अगेंस्ट कोविड. हिमा, हाँ, पहले तो हमको ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है बस, और कुछ नहीं. क्योंकि मैंने अपने जैसे बाहर का जो इतना कोरोना पॉजिटिव होकर बहुत सारा लोग डेथ हो गया, तो इवन पंजाब में भी मैंने देखा है. पंजाब में जो असम में लोग बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन थोड़ा लोग कर नहीं पा रहे. आई थिंक उसको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा या कुछ कोरोना के ऊपर इतना वो नहीं हुआ है शायद, इसके लिए उन लोग को मालूम नहीं है. लेकिन पंजाब में पहले बहुत केसेस थे लेकिन अभी कंट्रोल हो गया क्योंकि वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है. वहाँ यहाँ पे भी जो मार्केट है वो खोल के रखा था. लेकिन लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए लोग ने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके, क्योंकि ये टच करने में फैलते हैं, सभी को मालूम है, तो अभी कंट्रोल हो गया. मैं चाहती हूँ असम के सभी लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग भी ऐसे ही कीजिए. और जैसे हमारे ये 2-3 दिन में इतना ज्यादा बढ़ रहा है केसेस, तो बिल्कुल थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके कोरोना को असम से भगाइए. और उसके लिए मैं पूरा डॉक्टर्स को जैसे, और मैं आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया में पुलिस को मैंने बहुत बहुत बधाई दी उनको, क्योंकि पुलिस ने इतना अच्छा काम किया, डॉक्टर्स ने इतना अच्छा काम किया. हिमा दास, thank you Hima Das. Now last words to you Ansu. How would you like to conclude? What would you like to tell the people finally, very briefly?
like Bai Chung has said that it's time that we must focus on our health, and Shiva also said about that. So I also want to emphasize on that this is high time that we should focus on our health. Health is very important. तो आप अपने खाने पे उस पे ध्यान दीजिए. And अभी हमारे पास कोई option नहीं है. Like we have to look after our health. So yes, please give priority to the health. Absolutely. Stay safe, stay healthy, but don't lose hope. The show must go on. That is what our sporting icons have also said. I would like to thank all the panelists today for participating in this program and the viewers for watching the show. Good night and goodbye. Northeast Tonight, brought to you by Oil India Limited, conquering newer horizons, and Pius Group of Institution, Guwahati.